Hello everyone out here, welcome back to another video. You are watching FoneZone.ua with me guys, and today we are going to talk about another variant of curve series. जी हाँ, BlackBerry की curve series के बारे में तो हम सब already जानते हैं. We already know that this has been a great series out there. बिकॉज इस सीरीज ने काफी ज्यादा कह सकते हैं अच्छी मार्केटिंग की है, साथ में बहुत ज्यादा अपग्रेडेशन भी देखने को मिला है. बट व्हाट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट दी सीरीज इज की ये बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं. जैसे दे नेवर अडेप्ट फ्रॉम द अर्लियर वंस, दे स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग इन द एंटायर सीरीज. आइए देखते हैं क्यों, व्हाई आई एम सेइंग सो. लेट अस गेट स्टार्टेड विद द वीडियो एंड यू विल गेट टू नो व्हाई आई सेड सो. Today we are going to talk about BlackBerry Curve 39300, मतलब 9300 की हम बात कर रहे हैं कर्व के. इसका एक पहला वेरिएंट आया था जो कि था ब्लैकबेरी का कर्व का 8520. मतलब हमने इन दोनों वेरिएंट्स के बारे में बात किया हुआ है. 8520 के बारे में बात करें, 900 के बारे में बात करें, 9320 के बारे में बात करें, 9820 के बारे में, मतलब देयर आर वेरियस वेरिएंट्स ऑफ कर्व सीरीज आउट है. एंड व्हाई आई सेड कि ये हमेशा सीरीज को नए ढंग से करते हैं. फ्रॉम द बिगिनिंग दे स्टार्ट. व्हाई आई सेड सो, we have already seen BlackBerry Bold had adapted from 2 megapixel camera from starting in OS of 6, 5 from there, and they continued till OS 7. So they did not adapt in the Curve series, the Bold series adapted versions which were highly popular. They started from the beginning. As we have seen in the first variant itself in 8520 that it had a BlackBerry OS 5. The upgraded version, which is this 9300, this is the upgraded version of 8520. It has BlackBerry upgraded version of upgradable OS 6. मतलब कह सकते हैं कि अपग्रेड कर दिया अब इसमें. तो यही चीज अगर ये पहले से, बिकॉज वी हैव सीन BlackBerry's upgraded version in the Bold series as well, तो इसमें भी अपग्रेडेशन मान सकते थे. रीजन बीइंग ये लॉन्च जो हुए थे ये हुए थे ब्लैकबेरी के बोल्ड सीरीज के बाद. तो उम्मीद थी कि ये थोड़ा और अच्छा वेरिएंट के साथ, मतलब पुराने जो अच्छी चीजें थी उनको अडेप्ट करके नई सीरीज में ला दे तो ज्यादा अच्छा वेरिएंट होता. But no doubt, this variant has also been proven great in the market because it has operating system of 6, BlackBerry 6, as well as the screen has not changed much. स्क्रीन की बात करें तो ब्लैकबेरी की कीपैड टाइप की स्क्रीन जो होती हैं 2.4 तक ही रहती हैं. यस, 2.4 की इसमें भी है. और माइनर चेंजेस दैट इज कि 2.46 है एज कंपेयर टू द ओल्डर वर्जन्स. तो मतलब इतना कुछ ज्यादा वेरिएशन चेंज नहीं है. 0.1, 0.001, 0.002 ऐसे वेरिएशंस आते हैं. वेट में थोड़ा सा हल्का है. इट हैज बीन लाइट वेटेड आउट हियर वेयर यू विल सी TFT स्क्रीनिंग विद 65K colorization. This is very handy phone out there. Along with that, you will get to see various colors of this variation. अगर हम बात करें इस वेरिएंट की तो इसमें आपको एक्सपैंडेबिलिटी भी देखने को मिलती है. मेमोरी कार्ड की एक्सपैंडेबिलिटी है, as well as the storage capacity of this phone is around 256 MB. मतलब 256 की इंटरनल स्टोरेज है, वहीं पर उतना ही रैम आपको दिया जा रहा है. So this is quite a good thing that storage capacity is also there, but not very much. 256 MB is very less. You get to see 2 megapixel camera out there. Yes, you get to see 2 megapixel rear camera out there, and you also get to see no selfie camera out there. You will not get to see any selfie camera of this phone. If we talk about the loudspeaker, it has a loudspeaker, it has radio connectivity, it has Wi-Fi, it has hotspot, Bluetooth, 3.5mm jack, it has everything out there. मतलब जितनी भी स्पेसिफिकेशंस की बात करें, पहले वाले के जो थे, पहले वाले में जो थी वो सब है. ऑल द स्पेसिफिकेशंस आर देयर व्हिच वर इन द अर्लियर मॉडल्स आउट देयर. What all are things benefited over here is the Android system. The battery is also even the same. The battery is about 1100 mAh removable battery, so it remained the same. The only difference out there was in the operating system, in the storage capacity, because earlier you did not have the RAM, but now you have the RAM also. So these are the very minor changes involved in this series. इस सीरीज की बात करें तो इट हैज बीन अवेलेबल इन वेरी लिमिटेड साइट्स नाउ. व्हाई आई एम सेइंग सो, बहुत लिमिटेड साइट्स पर अवेलेबल है क्योंकि ये सीरीज अब इतनी ज्यादा मार्केट में नहीं देखने को मिलती, कर्व सीरीज. सो टॉकिंग अबाउट द साइट, here it goes with an amazing site out there.
तो ये एक ऐसी साइट है, दिस इज वन ऑफ एन अमेजिंग साइट आउट है विच हैज कर्व सीरीज वेरिएंट आउट है फॉर यू गाइस. Not just curve series BlackBerry, there are n number of brands out here like Apple, Samsung. You can see n number of brands out here. अभी साइट कौन सी है? द साइट नेम इज FoneZone.ae. दिस इज द साइट नेम आउट है फॉर यू गाइस. तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग साइट है ये. तो साथ साथ कहा जा सकता है कि इंटरेस्टिंग सी साइट पे आपको एक सर्च आइकन देखने को मिलेगा जहाँ पे आप अपना फेवरेट ब्रांड लिख सकते हैं, फेवरेट मॉडल लिख सकते हैं. साथ ही साथ व्हेन वी गेट टू सी द साइट, यहाँ पर आपको सीओडी देखने को मिलता है, फ्री होम डिलीवरी देखने को मिलती है, 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं. सो यू गेट टू सी लॉट ऑफ थिंग्स आउट देयर. This site offers the best pricing as well as the best offers in the marketplace. So you can definitely check this out. Link description mein hai. Otherwise, you can go on Google and type phonezone.ae. Till then, take care. I'll see you in the next video.